this distance. This is B. Okay, and this is tan theta is this we say is equal to A. This is equal to A. So if you know A and B, then you can draw any line. If I know ki theta is 30, then we know what is tan theta. I hope you remember from your school days. There's something like this. Isosceles, no, so equilateral triangle. That is, this is A, this is A, and this is A. You know, all these angles are 60, 60, 60. So if you draw a perpendicular from this vertex A to the base BC, this is all of us have done in school. So this is a divides into two congruent triangle. Congruent means they are similar in every manner. And what is this? This is theta, which is 60 degree. This is because this is an equilateral triangle. And this is what? 30, because half. And this is also 30. And this is 60. Now we know that tan theta, see, this is A. So this will be what? Half will be A by 2. Now suppose if this is A by 2, then what is this? This is a right angle triangle. Here this is 90 degree. So you know that and this A square, if you take this triangle ABD, so A square is equal to this square, that is AD square, plus BD square. What is that? Is nothing but A square by 4. Because BD is A by 2, so BD square is A square by 4. So from here we can find out the value of AD. And what is tan theta? Tan theta is nothing but opposite side by adjacent side. That is BD by AD. And we know BD is A by 2, and from this we can find out, so we can find out the value of tan theta. And if we know this B, then we know what will be the line like. So that is what we have to do. When you are doing future prediction, first thing we assume there can be both linear and non-linear. But the simpler form is linear. Linear means y is equal to ax plus b. So ax plus b, so what are the unknown? A and b. So if you have two unknowns, we have two unknowns A and B. That means you have to have two equations. In algebra, it says if you have one unknown, you need one equation. If you have two unknowns,
you have two equations. If you have three unknowns, you have three equations. So what we do is, what we do is, we sum this up once and then twice. But now it is very easy to find out this value by using Excel. You don't have to do all those mathematical calculations. When we were taught, that time Excel was not present, so we had to do a lot of calculations. See, if you have this equation, you can have where X is the independent variable and Y is the dependent variable. For example, suppose X is time, 200, 2001, then 2002, 2003. What was there in production? See here, there's a problem. Can you see it? See here, it is given the job tenure in weeks. W is for weeks. First observation tells you, just look at this column and this column. Leave this column. So you have this column 168. The cards, that person, he had a tenure of 168 weeks. He had worked there for 168 weeks and he had sold 272 cars. Then the salesperson, second salesperson had worked for 428 weeks and he had sold 428 cars, and so on. 296, 311, 392, 365, 80, 167, 56. So this is your raw data. As I had told you in forecasting, you always forecast by what has happened before. It is nothing, something from, it is not that you are someone who gets some vision कि अच्छा ठीक है कल ये काम होगा. Scientifically you don't do that. That only can happen in mythology. कि that person will just concentrate for some time and then he or she will say कि okay, आपके जीवन में कल ये होगा, चाहे ये आगे आपके जीवन में ये होगा. ऐसा here that method is not being used. It is the scientific method which is being used. Here what we do is we collect past information and based on that you make the future prediction. So this is the data which you have. This is your independent variable. If he has worked for whatever time he has worked, he has sold some car and so on. So based on this data, you make the future prediction. For this, what you do is, this is the what you do is you take the values of this as your on the x-axis and this, and then you insert a scatter diagram. This is your scatter. Okay, and this will, you will get this graph, which also has, because why this? Because some it is going up, down, and so on. Here you are getting this. These are the points. These are the points.
and then you have number of options. You choose this, which gives you a straight line. But you look at the graph. See, can you see the graph? Yes, ma'am. Yes? Now see, the line, it should be, the theory says this line should be at the minimum distance. The line between the, if you take some point should be above the line and some should be below the line. Everything will be not on the same line. You're taking an average. So here what is happening, the line shows that it is not equally distributed. So this data shows that it is not the representative line should not be linear. It should be curvy linear, because it is from here it is going up and then it is going down, isn't it? So instead of having a linear relationship, what I had shown was, I had shown a linear relationship. Y is equal to ax plus b. But suppose if I make it y is equal to this is square. This shows that this is a square. So this is not a linear relationship. Now it has become a quadratic relationship. Power, this has only one power, but this is to the power 2. So this is now this will give you a better result. If you, instead of using that line, if you use this line, this will give you a better result. It is a ma'am ax plus cx square root plus b, right? One is ax plus b. Yeah. Now you have introduced a third term, c x square. So how do you write x square? X, then that symbol and 2. That means it is square. If you write 3, it is to the power 3. If it is, you write 4, it will be the power. So here, forget about this line. Just see the points. The points are, it is shown that if the duration is less, the cars sold will also be less. But it is not uniform. It is going up and then it is also coming down. It is something like this. It is something like this. Okay. So this is not the line which is shown. Actually, I don't have that software to draw the curvilinear line. For that, you need another software which will give you the curvilinear line when the dots are there. So this is a straight line I have got, but actually the dots are like this. This.
something like this. And like this. Looking at the nature of the looking at the nature, see over here it is, if you see the common line, it is going up and then it is coming down like this. So instead of a linear line, a curvy linear line will be better. I'll show you why also. So instead of taking job tenure, which is weak, I have squared that. So here it is just the square. Square, you know, doing all this operation on Excel is very easy. If you write, see, here it is what? A2, A2 is this, A and 2 square. And then you just drag this down. So the same thing will be copied. Relatively, it will take the cell destination and it will copy. You don't have to do it individually. So you have the data now. This was the data given to you, the column A and column C. Now you have created this. Now you want to see the relation between cars sold and job tenure. So what you do is you do a regression analysis on this. So how to do the regression analysis? Okay, this is what you do is you go to data. Okay. Then here it is, you'll get this option data analysis. Data analysis. It will give you a number of things, but what we have to take is regression. Here it is regression. Okay. Can you see it? Vikas Kumar. Yes, ma'am. Meg Singh. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then I'll do okay. Then what is your input range? That is Y. Input Y range. So what is your Y is what? Dependent variable. So this is the amount of cars sold. So you take this column. You just and it will take it. Okay. Right, Now ma'am. in your input range, X range. Now you have to take X range. So here you have taken both. The Y, X, which is W over here, and X square, which is W square. So you take both. Okay. You take it over here. And then I should have done it. Okay. Now you want the labels also, and confidence level is say 95. You can change it, but I have taken it as 95. That means you are 95% confident whatever you are saying is good, because you cannot be 100%. It is something like what even pundits do. They make forecast. So they don't do it. They look at the patra. There is some mathematics involved in that also. They do some calculation and then only they predict. And that also, nobody is 100%. If you become 100%, then you are God. Isn't it? आपको यदि 100% सब कुछ पता चल जाएगा तो आप में और भगवान में क्या फर्क है? तो यहाँ हमें वो एरर है जो 5%, आप 95%, तो जो एरर आप करेंगे वो 5% है. So that is the difference between estimated and real. तो यहाँ पर आप इसको confidence level. Y range we have taken the same, ma'am. I think it need to be changed, no? It has to be changed. It is this A and B. No, this is wrong. This is C. Y range is C. Y is dependent variable, right, ma'am?
हाँ, dependent variable, which is the card sold. Which is card sold, that is C. C. And this is AB. ठीक है, अब ठीक है. So you are getting this. You will get this. I have taken it in a new sheet. उसमें फिर बहुत घटपच हो जाता है. तो intercept is this one. हाँ, ये आया हमारा. तो इसमें क्या है, y इज इक्वल टू, हमने बताया था ना, ये y इज इक्वल टू ax प्लस b c. तो यहाँ y तो दैट इज वी डोंट नो, दैट इज व्हाट ओवर हियर इट इज व्हाट कार सोल्ड. y you don't know, car sold. A is it is you give from the ये इंटरसेप्ट है 70.51 ही ले, 225 उतना लेने का जरूरत नहीं है. 70.51 एंड दिस जॉब टेन्यूर इज W. उसका कोएफिशिएंट क्या होगा 1.23 या 1.24 भी ले सकते हैं क्योंकि इट इज 9 ओवर हियर. तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये 4 हो जाएगा. और W स्क्वायर का इंटरसेप्ट है -0.00127. So now you can, that equation is this is the equation. You know the value of A जो इंटरसेप्ट है. सॉरी, A इंटरसेप्ट नहीं है, B इंटरसेप्ट है. B इज इंटरसेप्ट. ये W का कोएफिशिएंट है, ये W स्क्वायर का कोएफिशिएंट है. तो ये इक्वेशन आपको पता चल गया. जब इक्वेशन पता चल गया तो y की वैल्यू निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. x जैसे जैसे चेंज करेगा y वैसे वैसे चेंज करेगा. मान लीजिए अब आप पता करना चाहते हैं कि ये तो आपके पास डेटा था, अब यदि मान लीजिए वो कुछ और देखना चाहते हैं जो वहां नहीं है, तो भी आप कह सकते हैं कि इफ सपोज दैट पर्सन हैज 100 वीक्स ऑफ tenure, then how many cars he or she will be able to sell. So this is what is forecasted. ये हमारा था, ये मिल गया. यहाँ हमारा y जो एक्चुअल y है, ये एक्चुअल y है. अब हम एस्टिमेटेड y निकाल रहे हैं यूजिंग फर्स्ट वन ax प्लस b. यहाँ देखा, वहां से b निकल गया, हमें वैल्यू निकल गया है 67 है. ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूला निकलता है. एक्सेल में सबसे अच्छी बात है ना कि दे स्टोर द फॉर्मूला, नॉट द एक्चुअल वैल्यू. एक्चुअल वैल्यू वी कैन सी बट द फॉर्मूला इज स्टोर्ड. तो मान लीजिए आपने कुछ गलती से किसी A2 में जो भी वैल्यू था गलत लिख दिया है, तो वहां चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी चेंज हो जाएगा. A2 स्टोर क्या है, दिखा रहा है 217.81, but it has stored the relationship, which relationship we had found out from just taking the two variables x and y. x को अभी हमने क्वाड्रेटिक नहीं किया था, तो हमारा जो ये है ये तो एक्चुअल वैल्यू है. इसी में हमने ये जो भी वैल्यू था x का वो डाल के किया, तो ये एस्टिमेटेड वैल्यू आया. ये एस्टिमेटेड वैल्यू आया. अब हम ये दोनों, इस दोनों का डिफरेंस निकाल दिए. डिफरेंस का है क्यों, व्हाई, बिकॉज दैट इज द एरर. एक्चुअली में तो 272 था, मगर आपका आया 217.81.
तो 54 प्लस 54 का है। इसी तरह फॉर्मूला ये करेंगे, फिर आप इसको करेंगे तो पूरा वो आता जाएगा, वही चीज उसका फॉर्मूला कॉपी होगा रिलेटिवली। ये कर लिया तो पूरा आ गया, हर एक में कितना कुछ प्लस है कुछ माइनस है। मगर जब इसको सम किए तो मेरा वैल्यू आया 7.05। तो if your estimate is good, prediction is good, this should be almost zero, almost zero. I'm not talking, क्योंकि बताए तो जीरो तो हो नहीं सकता, तब तो 100% सही हो, मगर इसमें आ रहा है 7.05। अब दूसरी बार हमने निकाला, सॉरी, अब जो एस्टिमेट निकाला वो y1 के लिए निकाला। y1 है जब हमने क्वाड्रेटिक यूज किया है। देखो ये फॉर्मूला है, वही आया है ना हमारे 7.51 प्लस 1.24 a स्क्वायर माइनस, नहीं सॉरी, a2 माने x है, w एंड दिस इज 0.0012 w स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या है, तो हमारा आया वैल्यू एस्टिमेटेड 24.99 and actual was 272. Now I have taken the difference. This is the difference between y and estimated y1. इसका भी उसी तरह हर एक का निकाल लिया, जो एस्टिमेटेड था निकाल लिया। अब इसको ऐड किया तो हमारा आया आंसर -1.09। तो विच इज बेटर, जस्ट टेल मी विच एस्टिमेट इज बेटर। जो आपका एरर आया है, टोटल एरर, एरर में क्या है, कुछ प्लस है कुछ माइनस है, कुछ एक्चुअल वैल्यू से ऊपर है कुछ एक्चुअल वैल्यू से नीचे है। और जब आपने सबको ऐड किया तो पहले केस में व्हेन यू आर टेकिंग अ सिंपल रिग्रेशन योर वैल्यू इज कमिंग टू 7.05, और जब आपने एक्स स्क्वायर टर्म ऐड किया तब आपका आ रहा है -1.09। विकास कुमार, हेलो, आर यू देयर? यस तो बताइए कौन सा अच्छा है, 7.05 या -1.09? आपका ऑब्जेक्टिव तो होना चाहिए कि सम जीरो हो, कुछ ऊपर हो कुछ नीचे हो। जो एस्टिमेटेड और एक्चुअल में जो डिफरेंस आ रहा है, कुछ प्लस है कुछ माइनस है, सबको ऐड कर दीजिए तो आपका जीरो आना चाहिए, तब तो आपका एकदम ठीक है। यस मगर यहाँ वैसा तो नहीं होता है एक्चुअल लाइफ में। नहीं, तो प्रेडिक्शन आपने किया तो कौन सा ज्यादा अच्छा है? -1.0 because this is nearer to zero. yes ma'am. Comparatively we say this is closer to zero, so this is Yes, giving ma'am. you a better idea. So this Yes. prediction is better. Yes ma'am. Hmm. तो ये जो आपका, So, ma'am, one thing, if it is minus, that means we will not be able to supply that 1.0 नहीं, you are not, to the. I am not saying, ये तो आपका एक एरर आया। Okay. ये आपका इक्वेशन तो ये है ना, 70.51 प्लस 1.24 W, A2 यहाँ W है, that weeks, what is the tenure, minus 0.00127 y स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। अब W लिखिए, X लिखिए, जो भी, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। Right. तो अभी आपके पास जो भी आया, जो भी जिसका भी निकालना है, आप W के जगह वो वैल्यू पुट कीजिए, आपको रिलेशनशिप मिल गया ना। Right. मेन तो आपको ये करना है ना। देखिए
ये आपका फॉर्मूला है, आपको वैल्यू मिल गया, ए का भी निकल गया, सी का भी निकल गया, बी का भी निकल गया उस रिग्रेशन है। ये जो है, जो आपने रिग्रेशन एनालिसिस की, पहले डेटा में गए, फिर डेटा एनालिसिस में गए, जो आपका आया उसमें रिग्रेशन में गए। रिग्रेशन में गए तो क्या चाहिए था, एक्स क्या होगा आपका, वाई क्या होगा, ये देना था। यहाँ एक्स भी है, एक्स स्क्वायर भी है, तो आपने दोनों डाला। जैसे जॉब टेन्योर एक्स है और डब्ल्यू स्क्वायर इज जो वीक है उसका स्क्वायर ले रहे हैं, तो ये तो है, ये उसका लेबल है। और इसका मतलब y इज इक्वल टू, ये है आपका इंटरसेप्ट प्लस दिस इंटू w माइनस, क्योंकि यहाँ वैल्यू माइनस आई है, ये प्लस भी आ सकती है माइनस भी आ सकती है, यहाँ भी ये प्लस आ सकती है माइनस आ सकती है, यहाँ ये प्लस आ सकती है माइनस आ सकती है। इससे ये फायदा होता है कि आपको मैनुअली वो नहीं करना पड़ा। मैनुअली करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जितना बड़ा डेटा होगा उतना आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं कि पहले x को सम करते हैं, y को सम करते हैं, x स्क्वायर को सम करते हैं, y स्क्वायर को सम करते हैं, फिर yx को सम करते हैं और फिर निकालते हैं, तो काफी टाइम लगता है। तो वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे एक्सेल में केवल डेटा डाल दीजिए, क्या x है क्या y है, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप नहीं डिफाइन करेंगे, ये तो कंप्यूटर आपके लिए नहीं करेगा और गलत हो जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू y दो डिफरेंट लाइन है, ये दिमाग में रखिए, दोनों एक लाइन नहीं है, दोनों अलग अलग लाइन है। When y is the dependent variable and x is the independent variable, that is one line. When x is the dependent variable and y is the independent variable, that is another line. That will happen only if y, only when जो कोरिलेशन उनका एकदम एग्जैक्ट हो। कोरिलेशन मतलब जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है, यदि एग्जैक्टली एक ही पैटर्न में बढ़ रहा है तब देन वी से r इज इक्वल टू 1, दैट इज परफेक्ट कोरिलेशन। और r इज इक्वल टू -1, देन इट इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। जैसे जैसे y बढ़ रहा है वैसे वैसे x घट रहा है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, तो दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन। और हम कहते हैं कि जो कोरिलेशन है वो वैल्यू -1 से +1 तक होता है। यदि आपने गलती से कोरिलेशन r इज इक्वल टू 1.2 निकाल दिया तो गलत है, वो 1 से ऊपर नहीं जाएगा और -1 से नीचे नहीं जाएगा। तो यदि 1 है तो परफेक्ट कोरिलेशन है, पॉजिटिव, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y बढ़ेगा। इफ इट इज -1 तो जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y घटेगा। एनीथिंग फ्रॉम 0 to 5 और 5 to 1, तो 0 to 5 पॉजिटिव कोरिलेशन है बट बहुत स्ट्रांग नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने डेटा कलेक्ट किया, लंग कैंसर एंड स्मोकिंग, कितना हैवी स्मोकर है, कुछ उसको क्वांटिफाई करना पड़ता है ना, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव टेक्निक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्वालिटेटिव टेक्निक, क्वालिटेटिव टेक्निक नहीं, ये क्वांटिटेटिव टेक्निक। तो आपको मान लो 10 सिगरेट रोज पीता है तो आप उसको कुछ मार्क्स दीजिए, 5 या 6, यदि 6 पीता है तो कुछ उससे कम दीजिए, सो ऑन। वो आपके आप पर है, आप कैसे किस तरह से उसको क्वांटिफाई करते हैं। या स्मोक करता है तो 1 दीजिए, नहीं स्मोक करता है तो 0 दीजिए, मगर आपको तो देखना है कि कितना उनमें कोरिलेशन है स्मोकिंग एंड लंग कैंसर में, तो आपको उस तरह से उसको क्वांटिफाई करना होगा। तो ये डेटा है आपके पास, आप अपना सैंपल लेते हैं, हम पूरा यूनिवर्स तो नहीं ले सकते हैं ना, पॉसिबल नहीं है, टाइम भी खर्च होगा, पैसा भी खर्च होगा, तो हम एक सैंपल लेते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव है यूनिवर्स का। अब ऐसा नहीं किया कि आपके मन में जो 4 लोगों का आया आपने ले लिया, हो सकता है चारों लोग ऐसे हो जो हैवी स्मोकर हो, तो उससे आप
हम इन्फ्रेंस निकालते हैं, एक सैंपल लेके पूरे यूनिवर्स का इन्फ्रेंस निकालते हैं। तो इसका मतलब है कि जो सैंपल होगा वो यूनिवर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो जैसे जितने तरह के उसमें वेरिएशन हैं उस सैंपल में भी होने चाहिए। यदि आप केवल मान लीजिए जैसे इकोनॉमिक कुछ आप कर रहे हैं, अब प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, आपने बस जो 4 लोगों को लिया वो हाई इनकम ग्रुप के होंगे, तो आप पॉपुलेशन का कैसे इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं? आपके सैंपल में भी हाई इनकम के भी होने चाहिए, मिडिल इनकम के भी होने चाहिए, लो इनकम के भी होने चाहिए, तब तो आप जो भी निकालेंगे तो वो एक रिप्रेजेंट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट में जो भी चुन के जा रहे हैं सभी तरह के लोग हैं भाई, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी हैं, SC ST से भी हैं, मेन फ्रेम हायर कास्ट से भी हैं, तब तो वो हमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। क्या है पार्लियामेंट? क्या है? दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, दे आर द सैंपल एंड दे आर रिप्रेजेंट द होल ऑफ इंडिया। तो सैंपलिंग एंड यूनिवर्स का भी वही रिलेशनशिप है। तो वहां से हमने सैंपल लिया, हमने 15 डेटा लिया कि उनका टेन्योर क्या था, वो कितने कार को बेच सके, तो हमारा ये आया, ये रिलेशनशिप आया। तो ये है इंटरसेप्ट, जो बी है आपके फॉर्मूला में बी है, ये है ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक वाला हुआ। हमने कहीं ये हमने लिया था, तो ये केवल 2 ही था, केवल ए एंड बी, तो ये तो बी है और ये ए है। ये फॉर्मूला लेके हमने केवल लीनियर का किया, ये दूसरा वाला जो किया ये क्वाड्रिलीनियर नहीं सॉरी ये क्वाड्रिलीनियर का किया, क्योंकि इसमें स्क्वायर भी लिया है हमने। जब हमने क्वाड्रिलीनियर लिया, एस्टिमेट निकाला, तो हमें टोटल आया -1.09। इसमें एक्चुअली ऐसे तो बहुत स्टैटिस्टिक्स यूज होता है, एरर, मीन डेविएशन, ऑल दैट। सो आई एम टेलिंग यू अ वेरी सिंपल थिंग, यू फाइंड आउट द इक्वेशन। आप क्वाड्रेटिक ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? जब आप वो स्कैटर्ड डायग्राम बनाएंगे तो किस तरह का वो है उस पर डिपेंड करता है। यदि वो दिखा रहा है कि जो मेन लाइन है उससे कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, बराबर ही है करीब कर, तब तो लीनियर काम दे देगा, मगर नहीं है तो उस तरह से हमें लेना पड़ेगा। अब ये इस तरह का भी हो सकता है, ये इस तरह का भी हो सकता है ना। तो ये है जब मैंने पहले बढ़ा और फिर घटा। तो जैसे हमारा है अभी, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, इसका एक मतलब ये भी हो सकता है ना कि कुछ सालों तक तो वो काम कर रहे हैं, जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है वो ज्यादा से ज्यादा कार बेच रहे हैं, मगर कुछ समय के बाद मे बी बिकॉज ऑफ एज, बिकॉज ऑफ बोर्डम, वॉट एवर इज द रीजन, वो नहीं डिफाइन किया है, बट देयर इज सम रीजन, उसके बाद उनकी कैपेसिटी घट रही है। टाइम तो बढ़ रहा है, मतलब उनका टाइम ज्यादा दे रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस तो बढ़ रहा है, मगर कार जो बेच रहे हैं वो घट रहा है। तो इससे मान लीजिए कि जिसका भी आप कुछ इवैल्यूएशन करना चाहते हैं, फोरकास्टिंग करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। इसी तरह बहुत चीजों का हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा लीनियर ही हो। जब कॉर्डिनेट तो हो सकता है बढ़ेगा घटेगा, या इस तरह से भी गया, कुछ इस तरह से, सॉरी ये तो है कुछ, ये तो स्ट्रेट हो गया। तो अलग अलग जैसे होंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह का। जैसे इसमें क्या है, जो हमारा है ये है, इसमें x का कोएफिशिएंट जो है सो पॉजिटिव है
और इसका नेगेटिव है, तो वो हमेशा पहला वाला ये बढ़ेगा फिर घटेगा। यदि उल्टा रहता, ये नेगेटिव रहता, ये पॉजिटिव रहता, तो ये घटता अब फिर बढ़ता। अलग अलग उसके इंटरप्रिटेशन है। आपके पास अभी एक्सेल तो होगा सबके पास? हाँ मैम। Yes, ma'am. तो मैं एक हाइपोथेटिकल दे रही हूँ, आप मुझे जरा वीक है, मतलब सपोज डे, इट इज ये यहाँ कुछ और स्टोर रहा होगा ना, इसीलिए ये प्रॉब्लम कर रही है। Suppose this is week. By 10 क्यों कर रहा है? अच्छा, Ma'am, you can take the format painter, na? So it will be. नहीं फॉर्मेट पेंटर से नहीं, आई डोंट नो व्हाई इट इज डिवाइडिंग इट बाय 10। फॉर्मेट पेंटर से तो नहीं होगा है ना? Might be this is the regression formula sheet we just calculated our, so it is might be taking the above value. It is taking it from somewhere. Yeah. Just 1 second. So you can format the above pattern, ma'am. Okay, just 1 second. Now, suppose this is your data, consumer and sales. Now, all of you, one by one, tell me what will be the result for eighth if eighth consumer comes. Rakesh, Satyanarayan, Vikas, and Meg Singh. Meg Singh, are you present? Yes, ma'am. Okay, so this is the data. So you can see if the number of consumer increase, sales is also increasing. It is fluctuating. It is not increasing in the same order. This is increasing in the same order. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now suppose what will be sale if 8 consumers come?
Doing it in Excel is very easy. You don't have to do all the calculation. You just have to take down and then tell me what will be the equation. First, tell me the equation. I had done that in last class. This is simple linear equation, regression. Right now, I don't have Excel, ma'am, with me. Who's speaking? Satyanarayan. You don't have? No, ma'am. Okay. Rakesh? Ma'am, I don't have Excel right now. Actually, Excel will be there in your Microsoft Office. I'm You just using, have to take this. I'm using my mobile, ma'am. Oh. Yeah, I'm Insert, also connected from mobile. mobile, ma'am, sir. insert में जाइए, यहाँ से insert में जाइए, फिर scatter diagram में जाइए, क्योंकि ये x and y का है ना, तो you can have, Make your computer easier to use. you can do Windows this. on. यहाँ केवल points Press. मिलेगा, यहाँ कीजिएगा तो आपको continuous line मिलेगा. ये line मिला, हुआ ना? यदि मान लीजिए हम इंसर्ट में जाते हैं और हम केवल ये करते तो हमें ये ऐसा है, वही चीज है ना, एक लाइन, एक आप कर्व से इसको कर दीजिए तो वही आएगा, यहाँ कर दिए वही आ गया. अब इसमें भी बहुत सारे हमें ऑप्शन आ सकते हैं. ये ऑप्शन मैंने लिया, ये वही लाइन वही है ना कर्व, उसमें बहुत सारे ऑप्शन यहाँ आ जाते हैं. उसमें हमने वो ऑप्शन लिया जिसमें इक्वेशन दिया हुआ है, y is equal to 0.928x plus 7.28. तो यहाँ b की वैल्यू क्या है ये तो बताइए सत्यनारायण. 7.28, मैम. आपको 2 ही दिख रहा है? It is 7.285. नहीं मैम, दिख रहा है लेकिन या 7.25, बट राउंड ऑफ भी करेंगे तो 7.3 हो जाएगा ना. 7.3 या 7.3 हो गया. और आपकी a की वैल्यू है 0.928. या x हाँ? ये r स्क्वायर है, r is correlation between x and y, that is consumer and sales. यहाँ पर r स्क्वायर का मतलब होता है coefficient of determination, मतलब how much is being determined by, जो सेल्स बढ़ेगा या घटेगा, how much is being determined by consumer. बहुत चीज हो सकते हैं ना, सेल्स को अफेक्ट करने के लिए और भी चीज हो सकते हैं, मगर यहाँ हम केवल कंज्यूमर को देख रहे हैं. तो about 86%, about 86.2% is due to consumer. सेल्स बढ़ रहा है या घट रहा है ये डिपेंड करता है कंज्यूमर पर, बट इट इज ओनली 86.2%. 0.862 क्या हुआ? 86.2%, isn't it? Yeah. तो ये केवल 86.2% is determined by consumer. This is what the figure says. इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा तो दैट इज कोरिलेशन. इन दोनों में क्या कोरिलेशन है?
हाई कोरिलेशन है, क्योंकि 0.862 का भी आप निकालिएगा, यहाँ मान लीजिए निकालते हैं हम, तो क्या है फॉर्मूला, क्या होगा, ऐसे करते हैं ना, इसमें हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, हमें निकालना है 0.862, 0.862, तो काफी हाई कोरिलेशन है, 0.93 है। अरे इसको हम यदि इसको ये कर लें, दो ही, अच्छा 0.9 तक रखते हैं, तो काफी हाई कोरिलेशन है। फ्रॉम दिस डेटा वी कैन इन्फर कि देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन कंज्यूमर एंड सेल्स। जितने कंज्यूमर बढ़ेंगे सेल्स भी वैसे ही बढ़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। यदि ये नेगेटिव होता वैल्यू, तो हम कहते हैं कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। हालांकि दिस आई हैव फाउंड आउट फ्रॉम स्क्वायर आर स्क्वायर से, तो आर स्क्वायर प्लस माइनस दोनों ही आर स्क्वायर देगा, पॉजिटिव देगा, मगर कॉमन सेंस टेल्स अस कि दिस शुड बी पॉजिटिव। द रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर एंड सेल्फ इज ओवर हियर इट इज क्वाइट हाई। अब मान लीजिए कि ये आपका आपका ये क्या होगा, सेल्स इज इक्वल टू, आपका क्या वैल्यू था, $7.85, $7.85 285 प्लस 285 है, 285. प्लस आपका 0.28x, 0.28x is what? X is your consumer. This ये आपका फॉर्म, ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड कंज्यूमर। it is अब मान लीजिए 0.928, ma'am. अच्छा, I don't know, somebody said 0.28, so I have just No, one just- second. No, it is 0.928. 0.928. हाँ, 0.928. Thank you बेटा। Yeah. हाँ, ये है रिलेशनशिप। अब कंज्यूमर तो हमारे 1 to 7 थे। अब मान लीजिए हमने कंज्यूमर 10 ले लिया, तो सेल्स क्या होगा, तो सेल्स हो जाएगा इक्वल टू 7.285 प्लस 0.928 इंटू कंज्यूमर हमने 10 ले लिया है, तो ये हो गया 16, तो 16.56, तो इसको हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं 17, ठीक है। राउंड ऑफ कर दिया। तो यदि हमारा कंज्यूमर 10 हो जाएगा, तो सेल्स कितना बढ़ जाएगा, 17। मे बी इट इज इन 1000, हमने लिखा नहीं है, मगर जो भी है कंपैरेटिवली ये बढ़ गया।
तो ये 10 की जगह इजी कैलकुलेशन के लिए हमने 10 कर लिया, 8 भी करती, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए हम ये है 10 की जगह हम इसे 8 कर देते हैं, तो 15 हो जाता है। The way consumers are changing, sales will also change. जो हमारे पास डेटा है तो उससे हम ये कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं कि कंज्यूमर यदि चेंज करेगा नंबर ऑफ कंज्यूमर तो हमारा सेल्स का भी चेंज होगा। तो मान लीजिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने सारे कंज्यूमर्स आएंगे, तो यू कैन फोरकास्ट, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कितना सामान आपको रखना है, क्योंकि सेल्स बढ़ेगा कैसे जब तक वो सामान आप बेचेंगे नहीं। तो अकॉर्डिंगली यू विल कीप। तो दिस फोरकास्टिंग हेल्प्स यू इन प्लानिंग। कुछ भी प्लान करने के लिए आपके पास यदि 100% तो नहीं होगा, अगर कुछ प्लस माइनस करके आप यू विल बी विद इन दैट लिमिट। When we come to statistical quality control, we'll also study what is these limits. जैसे 6 सिग्मा तो हम करते हैं, 6 सिग्मा अचीव करना उतना आसान नहीं होता है, तो प्लस माइनस 3 सिग्मा ही तक जाते हैं, बिकॉज इट कवर्स 99%। और एक चीज याद रखिए कि देयर आर 2 थिंग्स इन स्टैटिस्टिक्स, वन इज अ पैरामीट्रिक पॉपुलेशन एंड अ नॉन पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक में हम लेते तो है मीन और डिविएशन, मगर क्या है वो जो उसका ग्राफ है किस तरह से जाता है, इस तरह का ग्राफ होता है, यहाँ से बढ़ा और यहाँ तक गया, यहाँ से शुरू हुआ, इट इज फ्रॉम माइनस, यहाँ पर प्लस इंफिनिटी है और यहाँ पर माइनस इंफिनिटी है। ये कहीं पर टच नहीं करता है एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है, ये ग्राफ जो है सो टच नहीं करता है, और हम कहते हैं कि ये ग्राफ सिमेट्रिकल है। इसी पर ज्यादातर जो स्टैटिस्टिक्स बेस्ड इसी पर है कि दिस इज ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसका यहाँ पर जो है सो डिविएशन नहीं है, मीन है। यहाँ मीन, मीडियन, मोड तीनों एक हैं। जनरली ऐसा नहीं होता है, ओनली इन नॉर्मल कर्व मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि मीन प्लस 3 सिग्मा और मीन माइनस 3 सिग्मा, ये जो एरिया है इट इज अबाउट 99%। 100% तो हम ले ही नहीं सकते हैं, दैट इट इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। फॉर एग्जाम्पल यू टेक हाइट, हाइट में एक तरह के पॉपुलेशन था, इफ आई टॉकिंग, तो वो क्या होगा, एक एवरेज हाइट होता है, उससे कम कुछ आधे लोग उससे कम होंगे, आधे लोग उससे ज्यादा होंगे। अब जायंट या डॉफ, ये 2 एक्सट्रीम हुए, तो ये बहुत कम है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो भी प्रिडिक्शन हो ये प्लस माइनस 3 सिग्मा में आए, तब हम कहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है इज अंडर कंट्रोल। ये तो आप लोग करते भी होंगे शायद, जो भी क्वालिटी कंट्रोल वगैरह में काम कर रहे हैं, इसमें कुछ कर रहे हैं ना क्वालिटी। यस मैम, या मैम, मस्ट बी डूइंग दैट, प्लस माइनस 3 सिग्मा, अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट। यस मैम, हु स्पीकिंग, आई कांट सी यू। या सत्यनारायण मैम, अच्छा, यू आर स्पीकिंग, ओके। या So you must be doing that यस मैम, to keep that thing under control. The rejection region उस control के ऊपर जाएगा तो that will be rejected. राइट। तो अब
sorry. So now you can see the graph and you have the equation also. ये ग्राफ में इक्वेशन दिया हुआ है. अब खाली आप ये एस्टिमेट करके ये बताइए कि इसका क्या एस्टिमेट आता, कैसे करेंगे राकेश कुमार? ये तो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इसमें प्लस सिग्मा एप्सिलॉन होता है. Sorry, ma'am, I don't have more idea about it. अभी तो हमने समझाया ही था. Yes, ma'am, you समझाया अभी था. एक मिनट, ये हुआ ना, y इज इक्वल टू ax प्लस b, ये तो इक्वेशन हुआ. और उसमें कुछ ये एस्टिमेट है, ये तो एक्चुअल है, मगर इसमें यदि एस्टिमेशन निकालना है, जनरली इसको हम एक एप्सिलॉन चाहे ई लिख देते हैं. इसमें एप्सिलॉन का तो ऑप्शन नहीं है. ई इज एरर, ये एस्टिमेटेड हुआ. तो एस्टिमेटेड को निकालने के लिए आप क्या करेंगे? एस्टिमेटेड को निकालने के लिए आप करेंगे, आपका तो एक्चुअल हुआ, ये एक्चुअल है, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई. ये तो आपका एक्चुअल हुआ. Yes. अब हम लिख रहे हैं, यहाँ सेल्स हुआ, यहाँ सेल एस्टिमेटेड, EST सेल्स. ये एस्टिमेटेड सेल्स हुआ. ये तो ये फिगर है जो एक्चुअल है. दिस इज, उसको हमने कॉपी कर लिया यहाँ. यहाँ कॉपी कर लिया. अब एस्टिमेटेड हमें निकालना होगा. ये कैसे निकालेंगे हम? दिस इज इक्वल टू जो उसका फॉर्मूला था, क्या था, 7.298 ना, नहीं क्या था, हाँ 7.285, 7.285 प्लस 928 into फिर क्या है, 0.9. 928 928 इंटू पहला वाला 1 है, isn't it? इंटू एक्चुअली वो हम ये भी ले लेते ना तो ज्यादा ठीक रहता है. 1 मिनट, कंज्यूमर, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं वहां. ये क्या है, A1 है यहाँ पर,
नहीं A2 है, A2. A2 है। तो ये आया एस्टिमेटेड। अब ये अपने आप ही ले लेगा, इसको बस ड्रैग ऑन कर देना है। ये आपका आ गया एस्टिमेटेड। अब इसमें आप एरर निकालिए। दिस इज नथिंग बट ट्रू माइनस एस्टिमेटेड। दिस इज द एक्चुअल and this is the estimated. Minus ये हुआ ना, ये आपका आ गया। कोई प्लस है कोई माइनस है, ठीक है। अब इसका सम निकालिए, तो ये 0 आया। तो दिस इज परफेक्ट फिट। देख रहे हैं, ये जो आया है कुछ नीचे है कुछ ऊपर है, फिर नीचे है फिर करीब करीब है। तो इसमें हमने ये देखा कि इनका जो एरर आ रहा है, टोटल एरर, आई एम नॉट टेकिंग द एब्सोल्यूट ऑफ 1 1, आई एम टेकिंग द टोटल एरर। तो दिस इज 0। तो दिस इज अ गुड प्रेडिक्शन। अभी जैसे यहाँ पर है कि सेल कंज्यूमर जो है कंज्यूमर क्या है 1 2 कुछ और फॉर्मूला ले रहा है इसलिए। तो यू नो दैट कि दिस इज 1 2 3 4 7 का। तो उसी हिसाब से आप कुछ भी नंबर हो, if you use that relationship you can find out the sale for any given number of consumers. This is simple regression, and you have seen that the formula which you have obtained is a very good fit. So it is a good. So if you can try these out, it's very simple, क्योंकि अब हमें उतना कैलकुलेशन नहीं करना होता है। जैसे पहले तो हमें फिर हर एक x y वैल्यू दिए हुए हैं, देन आई हैव टू फाइंड आउट इफ इट इज सिंपल लीनियर। यदि वो क्वाड्रेटिक हो गया तो हमें 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस चाहिए। अभी तो 2 ही इक्वेशंस में काम चल जाएगा, क्योंकि 2 ही अननोन है a and b. If it is quadratic, then you have a, b and c. Then you will need 3 equations. और यदि मान लीजिए अभी तो हमें बस 7 डेटा पॉइंट्स दिए हमें। अब when you are doing computer using a computer software, whether you have 10 data points, if you have 100 data points, if you have 200 data points, it hardly makes a difference. That is one advantage, very big advantage of computerization. The data, volume of data and the speed, this is increasing day by day. जहाँ पर हम स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, ये क्या है? स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग है, सब्जेक्टिव तो नहीं है, इट इज क्वांटिटेटिव। तो आपने वैल्यूज दे दी है, फिर आपको आंसर मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा। ऐसे तो इतना ही 7 डेटा पॉइंट्स का, इफ यू आर डूइंग इट मैनुअली, इट विल टेक यू एटलीस्ट हाफ एन आवर, इवन इफ यू आर वेरी फास्ट एट कैलकुलेशन, बिकॉज यू विल हैव टू मेक एक्स का बनाना पड़ेगा सेल्स का, फिर एक्स वाई का बनाना पड़ेगा, फिर वाई स्क्वायर का बनाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का बनाना पड़ेगा, एक्स वाई का बनाना पड़ेगा, and then you have to do the calculation and then solve it simultaneous equation को solve कीजिए तब मिलता है। अब now it is very easy, you can try, नेट पर तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए होंगे, you try it on Excel yourself. एक तो ये कर सकते हैं, या फिर आप ये जो सेल्स हैं इसका आप डेटा में चले जाइए, डेटा एनालिसिस में गए। अब आई एम गोइंग ऑन रिग्रेशन।
रिग्रेशन में इसका वाई रेंज है, ये तो हटा दो, पहले का है, ये आपका वाई रेंज है, isn't it? सॉरी, इस एक्स में आ गया, ये आपका वाई रेंज है। अब एक्स रेंज क्या है, ये है, ठीक है। नाउ यू डू ओके, तो यू विल गेट इन दिस वे। इंटरसेप्ट ये आ गया, ये उसका एक्स का कोएफिशिएंट आ गया, ये थोड़ा डिफरेंट है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। I have to take this, क्योंकि लेबल भी ले रहे हैं ना। तो ये आ गया ना, ये आपका आ गया, करीब करीब वही है वैल्यूज, तो वही वैल्यूज आए हैं। आपका आ गया y इज इक्वल टू 7.285, उसके बाद वाला मत लीजिए, प्लस 0.928 कंज्यूमर। सेल्स इज इक्वल टू 7.285 प्लस कंज्यूमर इज 0.928। यही आया था हमें पिछली बार भी, जब वी हैड डन इट फ्रॉम ग्राफ, Right, ma'am. isn't it? Either you do this, because ये ग्राफ तो आप ओनली 2 डायमेंशनल बना सकते हैं ना, बट इफ यू आर यूजिंग दिस मेथड, ये सारे बहुत सारे आते हैं, मगर अभी आप वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एक बस ये है, और दूसरा ये है, ये कोएफिशिएंट है, और ये आपका आर स्क्वायर है। that is the determination, how much this consumers are determining। ये वो हमने अप्रोक्सीमेट कर दिया था ना, इसीलिए 0.9 आ रहा था, मगर एक्चुअली इट इज कमिंग टू 0.86। इट इज, इफ यू अप्रोक्सीमेटेड, दिस विल आल्सो कम टू 0.9। तो काफी हाई कोरिलेशन है। फ्रॉम हियर यू कैन सी देयर इज हाई कोरिलेशन बिटवीन कंज्यूमर एंड सेल्स। Whether you do this, because if you have more than 2 independent variable, then you have to do this. You cannot draw it. हमारे पास 3 डायमेंशनल ड्रॉ करने का अभी सॉफ्टवेयर नहीं है, मेरे पास तो नहीं है। 2 भी, जैसे मान लीजिए 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए सेल्स को कंज्यूमर प्लस एडवर्टीजमेंट, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो ये दोनों सेल्स को अफेक्ट कर रहे हैं। तो आप इससे निकाल सकते हैं, y की जगह तो आपको पता ही है सेल्स देना है, और x की जगह दोनों लीजिएगा, जो भी डेटा आपके पास में कंज्यूमर का है और एडवर्टीजमेंट का है, दोनों को लेना है, और जो इस तरह का आएगा आपको उस तरह से उसे दिखाना है। जैसे हमने उसमें भी किया था ना, जब क्वाड्रेटिक में लिया था तो दोनों ले लिया था, w भी और w स्क्वायर भी, वहां से इक्वेशन आ जाएगा। तो इट विल बी a प्लस y इज इक्वल टू a प्लस bx प्लस cx1 प्लस cx2 प्लस जो भी एप्सिलॉन आया एस्टिमेटेड, एंड एक्चुअल में जो डिफरेंस आएगा वो दैट विल बी द एरर। तो सम ऑफ द एरर यू शुड ट्राई टू मिनिमाइज। जो भी प्रिडिक्शन आपका देता है कि सम ऑफ द एरर इज मिनिमम, दैट यू हैव टू टेक। दैट इज इन अ वेरी सिंपल वे। आई एम नॉट गोइंग इनटू डीप स्टैटिस्टिक्स, उसमें आपको डिविएशन वगैरह बहुत देखना होता है, मैड वैड सब,
Magar it is, I'm not doing that. This is the most simple way to check whether your prediction is good or not. So you try, all of you try this on Excel. आपके घर पर तो होगा ना, यहाँ मोबाइल यूज कर रहे हैं तो क्या हुआ, घर पर तो Yeah. होगा ही. Yes, yes, we can do that, ma'am. Yeah. You take any data from the net or from any book and try it on the, you try both. Just for example, for two variables, you try it by drawing also, as well as from this regression analysis, data Yes. analysis. Yeah, दोनों ma'am. को. This you can do for only for two variables. If you have more than two variables, then you have to go for regression analysis. But one thing you should be very clear, that I'll do in next class, that there should not be any relationship between the independent variables. जैसे दो independent variables, they are very highly correlated. उसका आप एक तरह से चेक कर सकते हैं कि आप उन लोगों का एक ग्राफ बना लीजिए, x1 and x2, जैसा I told you, consumer and advertisement. देखिए इन दोनों में क्या कोरिलेशन है, उनका ग्राफ बना के देखिए, आर की वैल्यू निकल आएगी. And then you can say whether if they are correlated, very highly correlated, then you should neglect one. It is same thing like suppose I want to make my. So, ma'am, what is that R square should be like to say it is highly correlated and not correlated? It should be less than 0.5? It should be less than 0.5. 0.5, then it is, there will be no correlation. There will be correlation, but very weak correlation. Okay. Like suppose if you are making milkshake, उसमें आपने शुगर भी डाल दिया, शुगर फ्री भी डाल दिया, तो क्या फायदा हुआ? Okay. कोई फायदा नहीं हुआ ना. बोथ आर कोरिलेटेड, भाई दोनों तो उसको मीठा ही करेंगे ना. आप आइदर शुगर डालिए, शुगर फ्री डाल दीजिए. Right. हाँ, तो यू दैट वे यू हैव टू चेक. जैसे जैसे वेरिएबल्स बढ़ाते जाते हैं तो रिलेशनशिप भी ज्यादा होते जाते हैं. यहाँ तो पहले एक था, तो देयर वाज रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x. अब मान लीजिए दो हो गया, x1 एंड x2, तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x1, y एंड x2, x1 एंड x2. तीन हो गया, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है. ऐसा नहीं है कि आप ब्लाइंडली कुछ भी डाल के देख लीजिए. यू हैव टू सी. दैट वी कॉल इट कोलिनियर. The independent variable should not be collinear. Statistics में we say कि y is equal to a plus bx1 plus cx2. But then x1 and x2 should not be correlated. There is no collinearity. Collinearity we have to check. जितना बढ़ेगा variables उतने relationship बढ़ेंगे. Is it clear? Yeah, ma'am. Understood. Okay. So this is how we use quantitative techniques for doing forecasting. Forecasting तो सब जगह जरूरत है. Whether it is for inventory, whether it is for finished good, whether it is for whatever reason you are doing. क्योंकि when you are planning for the future, so you have to know कि future में क्या होगा, क्या demand होगा. Accordingly you do the planning. So next we'll go for design process. जो सर्विस या जो भी आप, why are you doing this forecasting? Because you will be, अभी तो हम लोग शुरू के operations के एकदम beginning में हैं. We had done sourcing, then we had done purchasing, then we will be doing whatever things we are going to produce, whether it is service or product, उसकी डिजाइनिंग कैसे करते हैं.
So in design process, first thing is your idea. First of all, what are you going to do? Suppose it will depend upon the type of business you are doing. If you are making something, it will be the idea to make that product. Ki what Ma'am, ma'am, we are unable to see the presentation. ma'am. PPT. you are not able to see it. No, ma'am. Just 1 second. Yeah, now it is okay. Now it is okay. Na? Yeah. So first is your idea, what you are going to do. This is right from the beginning. If you are already in a production process, naturally you already know okay, what you are going to make, what service you are going to do. So that is then, but you have to, initially it is the idea that is important. What the consumer wants, what type of product they want, what type of a service they want. Like for example, when Mr. Neeraj had thought about this particular product, our product is what? Management certificate course. So why this idea came to him? Maybe he wanted to cater to the needs of the thousands of students or working professional or anyone who want to have management skills at a affordable price. And the product should be of quality. Affordable price does not mean the quality is compromised. So that idea must have come to him, and then he would have designed what to do with the product, how to launch this product, what features to add to this product, who should be his targeted audience. All these idea must have come to him, and then he must have done research on it. He must have talked to several people, both from industry and academia, and developed. Then he must have done the research. Then the conceptual exploration had come. Then concept development has come. Then initially a prototype, like designing something for a small group that we had already done in last year. We had done this on a very small group. We had tried presenting this idea to them, and we found out that this was acceptable. They wanted it, and they said more students will be interested in it. So and then what will be the design document? Prototype, then design document, and finally the production management. How to produce it in a larger scale so that it helps everyone, whoever is interested in this particular product. I'm talking about this one particular product because all of you are associated with it. It can be anything, even if a pencil. A pencil, how should it be designed so that it is comfortable? It writes in a way that is pleasing to you. It is not very. You have pencils also for the different groups. If it is for an artist, if it is for a small child, whatever it is the reason, it is for the consumer. You have to keep the consumer in mind. Who is going to use it? Accordingly, the product or process is designed. Even in an educational institution, especially for management skills or any other professional education, things keep on changing. The market demands different things at different times. So accordingly, you have to keep on changing your syllabus. The same old syllabus will not do. That, for example, our forefathers, mostly what they used to study, BA, MA, law, because at that time, engineers, doctors were not in all that high demand. People were not going for professional education. They were going for general education. That was much before, even before my generation. Now you are my next generation. So you are more and more demanding. You want variety of things to learn. You want to be up to date with whatever is the market demanding. Accordingly, you want to upskill your professional profile and all that thing. So it keeps on changing. You design once, then you redesign, then you redesign.
maybe you design for the first time. It depends upon at what level your organization is. Product service design is the process used by designer to blend user needs with business goals to help brands make consistently successful products and services. Product service designers work to optimize the user experience in the solutions they make for their users and help their brands by making products sustainable for longer term business needs. It is something we are designing so that it is not that for once it is, maybe some modification will be required, but still it should be for a long period, keeping the demand for this particular type of product for a longer, or else the product life cycle of the product or process becomes very small, and then you have to keep on changing your design process very, very frequently. Major factors in design strategy, what you have to see: cost, how much cost is incurred; quality, what is the quality of the product; टाइम टू मार्केट. अब आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी डिजाइन कर रहे हैं मगर आपके कंपटीटर्स मार्केट में पहले पहुंच गए, तो योर प्रोडक्ट वोंट बी दैट सक्सेसफुल इन द मार्केट इवन इफ इट इज अ बेटर. अब ऑलरेडी तुमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया है तो फिर तुम दोबारा तो नहीं करोगे ना. तो टाइम टू मार्केट, देन कस्टमर सेटिस्फैक्शन. कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप क्वालिटी क्या है आपके कस्टमर्स, व्हाट टाइप ऑफ अ क्वालिटी दे रिक्वायर, जो उनके नीड्स को सेटिस्फाई कर दे. जैसे आज मिस्टर चंदन दास जब बोल रहे थे तो बोले कि क्वालिटी लीडरशिप, जैसे उसमें भी क्वालिटी की जरूरत है. अब सब लोग गांधी जी तो नहीं बन सकते हैं ना, न बन सकते हैं ना जरूरी है. तब देश कुछ भी नहीं चलेगा, एक ही तरह के सब हो जाएंगे. वेरिएबिलिटी इज देयर इन एवरीथिंग, वेदर इट इज क्वालिटी, वेदर इट इज कास्ट. अब मार्केट में चले जाइए, जो शर्ट आपको हाई ब्रांड शर्ट्स मिलेंगे जो बहुत एक्सपेंसिव हैं, उसी तरह के डिजाइन के शर्ट बहुत चीपर रेट में भी मिल जाएंगे. मे बी उनका ड्यूरेशन उतना ज्यादा ना हो, बट मिल जाते हैं. ऐसा नहीं है, मार्केट में सभी तरह के प्रोडक्ट्स हैं. बहुत अच्छे क्वालिटी के भी हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी हैं. क्वालिटी में देखने में तो वैसे ही है, मगर कॉस्ट वाइज इट इज मच चीपर, प्लस मटेरियल माइट नॉट बी दैट गुड. उनका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल उतना ज्यादा नहीं होगा, बट इट इज देयर बिकॉज देयर इज अ डिमांड फॉर इट. डिमांड जब रहेगा तो यू हैव टू सेटिस्फाई दैट. then only that is why forecasting is very important. We have to forecast and see कि what is the demand like, आपको क्या प्रोड्यूस करना है, किस क्वालिटी का करना है, किस कॉस्ट का करना है. देन कंपिटिटिव एडवांटेज, इसको करके आप अपने कंपिटिटर से कैसे जीत सकते हैं. क्या उनमें फीचर्स हैं, उसमें कुछ एडिशन कर दीजिए. जो उनके फीचर बहुत डिजायरेबल नहीं है उसको डिलीट कर दीजिए. जो भी करना है, प्लस माइनस जो भी करना है, so that you are one up, and it is an ongoing process. ये तो ऐसा है कि आपने आज कुछ किया तो आपका कंपटीटर कुछ और करेगा, फिर तीसरे दिन आप कुछ करेंगे. दो ही हैं, मान लो दो हैं, ऐसे तो यहाँ बहुत सारे हैं. तो that is a very complex situation. Product and service design or redesign be closely tied to organization strategy. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रैटेजी है. अब जैसे फॉर एग्जांपल आई वाज टॉकिंग अबाउट टाटा कार. व्हेन दे स्टार्टेड बिल्डिंग, व्हेन दे विजन, उनके पास ये विजन आया कि पैसेंजर कार बनाएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ था, नो हाउ था, उनके पास ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप था, मगर ऐसा कार बनाए जो मिडिल क्लास को सेटिस्फाई करे, जो उस समय उनके कॉम्पिटिटर्स के पास उतना ज्यादा नहीं था. जैसे जो देखने से भी बहुत सुंदर हो, कंफर्टेबल भी हो, और बहुत एक्सपेंसिव भी ना हो, जिसमें ज्यादा कैरिंग कैपेसिटी हो.
तो इस तरह से उन लोगों ने उस समय डिजाइन किया। अब इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है, पहले तो क्या था, मारुति था, हिंदुस्तान मोटर्स था, एक आध फिएट भी था, और फिर टाटा इंडिका आया, पर अब तो बहुत ज्यादा है, हुंडई है, ये है, वो है, सभी करीब करीब आ रहे हैं इंडिया में। तो कंपटीशन बढ़ गया है, इसीलिए उनको कीप ऑन रीडिजाइनिंग इट, मेकिंग इट मोर सेलेबल। What are the activities associated with product service and service design? Translate customer wants and needs into product and service requirements. हमने पहले भी कहा, जब तक जो प्रोडक्ट जा रहे हैं, whether it is service or product, you have to translate it. वो जो नीड है उसको आप ट्रांसलेट कीजिए। आज जैसे मैनेजमेंट स्किल्स का नीड है, लोग चाहते हैं कि हमें रीजनेबल प्राइस पर मैनेजमेंट स्किल्स मिल जाएं, ये है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्ट डिजाइन किया गया। रिफाइन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जैसे फॉर एग्जांपल आई वाज टॉकिंग अबाउट टाटा इंडिका, तो उसको रिफाइन कर, क्योंकि जो टाटा इंडिका आज से 1984 में लॉन्च हो, अब नहीं है हो रहा है, उनको उन लोगों ने दूसरे नाम से दूसरे रीडिजाइनिंग करके उसको रीलॉन्च कर रहे हैं। डेवलप न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, नए नए जो डिमांड्स आएंगे उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लॉन्च करने हैं। फॉर्मुलेट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्वालिटी गोल्स, सॉरी क्वालिटी गोल्स, क्वालिटी गोल्स मतलब कि क्या, किस तरह का क्वालिटी डिमांड में है। अब हिंदुस्तान में सभी तरह के लोग हैं भाई, मिडिल क्लास के भी हैं, लोअर क्लास के भी हैं, तो सबके अलग अलग क्वालिटी गोल्स होंगे ना। तो यू हैव टू, आपका क्या मार्केट है, टारगेट मार्केट क्या है, यू हैव टू लुक दैट, कीप दैट इनटू योर माइंड। फॉर्मुलेट कॉस्ट टारगेट्स, ये क्वालिटी किस कॉस्ट पर आप देना चाहते हैं। कंस्ट्रक्ट टेस्ट प्रोटोटाइप्स, व्हिच आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय फर्स्ट स्लाइड। अब फिर डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन इज वेरी नेसेसरी। आप जो भी काम कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, बिकॉज टू मेंटेन दैट क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी नेसेसरी। आई हैव ऑलरेडी सेड कि डॉक्यूमेंटेशन इज नेसेसरी बिकॉज अ सिस्टम शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी पर्टिकुलर पर्सन। वो रहे ना रहे, सिस्टम को तो चलते रहना है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज सॉर्ट ऑफ अ पेरिशेबल गुड ओनली। आज है कल नहीं है, या हो सकता है मेरी डेथ हो जाए, या हो सकता है हम यहाँ से कहीं चले जाएं, तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत, उसी डॉक्यूमेंटेशन से आप आगे बढ़ सकते हैं, प्लस क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं कि हाँ ये स्टेप्स थे, ये स्ट्रक्चर था, ऐसे ऐसे करने से हमें ये इस तरह का क्वालिटी मिला। तो वो कहीं डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, जो अगला करे तो फिर वैसा ही करे, उसी में कुछ रिफाइनमेंट ला सके। रीजन क्या है? इकोनॉमिक, बिकॉज इकोनॉमी, जैसे फॉर एग्जांपल when the economic boom was there in India after 91, डिमांड भी बहुत बढ़ गया, बहुत तरह तरह के प्रोडक्ट्स आने लगे, हम लोग उसे खरीदने लगे। देन सोशल एंड डेमोग्राफिक, अब सोशल डिमांड्स भी हो जाते हैं। देन पॉलिटिकल लायबिलिटी और लीगल, पॉलिटिकल डिमांड्स भी होते हैं। कॉम्पिटिटिव, कॉस्ट और अवेलेबिलिटी, कितने क्या, टेक्नोलॉजिकल, ऑल दीज थिंग्स आर रीजंस फॉर प्रोडक्ट डिजाइनिंग। So main focus of product and service design should be on customer satisfaction, because I said your supply chain starts from customer and ends on customers. Understand what the customer wants. Secondary focus होगा functions, क्या उनके functions है आपके product and service के, क्या cost है, क्या profit है, क्या quality है, क्या appearance है, ease of product, ईज ऑफ मेंटेनेंस, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है। बट फर्स्ट इज योर कस्टमर, कस्टमर की क्या नीड है, उसको कैसे सेटिस्फाई करना चाहिए इन अ गुड क्वालिटी एंड रीजनेबल प्राइस।
Do you have any questions? Because I think I'll complete this in next class. There's not enough time left. Hmm? Hello? Yeah, ma'am. We are in line, ma'am. We are in line with content. Yes, but if you have any question, have you understood everything? Have you understood the forecasting techniques? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hmm? We understand the things, and now we will practice that 2 or You 3 times. practice because this is very easy now. Now Yes, ma'am. with your software, different types of software, but only thing you wherever see, अभी तक तो ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना है, इवन विथ ऑल दिस मशीन लर्निंग एंड ऑल दैट, इट इज ओनली हेल्पिंग यू, इट हैज नॉट ओवरटेकन ह्यूमन ब्रेन. क्योंकि जो हमें न्यूरल नेटवर्क्स भी ड्रॉ बने हैं, जितने नेटवर्क्स हमारे दिमाग में हैं, इवन वी डोंट नो. तो अभी तक ऐसा कंप्यूटर नहीं बना है. तो यू हैव टू थिंक बिफोर यूजिंग दैट डेटा. How relevant is the data? How meaningful is the result? एकदम ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है. जैसे मैडम ने भी कहा था ना, रीना मैडम ने, कि एवरीथिंग कैन नॉट बी क्वांटिफाइड. तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों साथ चलना चाहिए. Yes, ma'am. There's a technique called Delphi method. जैसे Delphi method में suppose I give you a question, सभी को दे रहे हैं, all 9 of you, कि what is your opinion about the future of this course? And you, all of you, you don't discuss among yourself. Okay? Don't discuss among yourself and you give me the answer. Then analyze and see. This is in Delphi में तो ये 3-4 राउंड में होता है. कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है, एक आर्बिट्रर होता है, who is neutral, उसका कोई अपना ओपिनियन नहीं होता है. Then he asks for opinion from different experts. कोई मार्केटिंग का होगा, कोई कहीं का होगा, कहीं का. यहाँ तो चलो आप लोग सभी स्टूडेंट हैं, बट योर बैकग्राउंड इज डिफरेंट. तो एक तरह से आप लोग सारे एक्सपर्ट्स हो गए एंड आई एम द आर्बिट्रर. तो पहला राउंड जब आ जाएगा तो उसको मैं एनालाइज करूंगी. देन आई विल गिव यू नेक्स्ट क्वेश्चन. Then when the consensus come, then we take a decision कि हाँ ये forecast होगा. ये एक subjective way of analyzing things and predicting what will be the future. So now I am giving you this question. Let me know, what do you think about the future of this particular product, that is management certificate course. और आप सभी मुझे अपना ओपिनियन ईमेल कर दीजिए. अभी तक मुझे फर्स्ट असाइनमेंट का बस 4 मिला है. राकेश कुमार, विकास कुमार, सत्यनारायण एंड मेघ सिंह. 5 लोग अभी तक मुझे कुछ नहीं दिए हैं. आई डोंट थिंक इट वाज वेरी डिफिकल्ट. आई हैड जस्ट सेड कि टेक अ प्रोडक्ट, वो उसका विजन, मिशन, वैल्यूज, यही सब तो पूछा था. कोई ज्यादा तो यही तो हम लोगों ने शुरू में पढ़ा भी है. And they are not present here in the class also. जैसे हम ये है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. पहले तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट को, फिर वो ग्रो करता है, फिर वो मैच्योर करता है, फिर एक समय आता है कि सैचुरेशन हो जाता है, देन इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग. आज के जमाने में इतना कंपटीशन है, प्लस इतने इनोवेशंस हो रहे हैं कि दिस साइकिल इज बिकमिंग शॉर्टर एंड शॉर्टर. फॉर एग्जाम्पल, आज आपने एक मोबाइल फोन खरीदा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसकी यूटिलिटी नहीं है, मगर कल मार्केट में कुछ और आ गया जिससे ज्यादा अच्छे फीचर्स हैं. Then what do? You either resell to someone who requires a mobile phone and who does not have the money to buy a new one, so he or she buys it from you and you buy a better product. So जो लाइफ साइकिल है ना प्रोडक्ट का, बहुत छोटा होता जा रहा है, दिन पर दिन छोटा होता जा रहा है. एंड while designing you have to keep that also in mind.
Ma'am, one question. Hmm. If you want to like forecast for any new product, hello, Tell me, I'm listening. yeah, how should we go about? See, first of all, you have to have an idea कि what. ऐसे हवा में बात करने से नहीं चलेगी. हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं. What will that process like to? हाँ, तो see, first of all, क्या करना चाहते हैं आप? मान लीजिए एक पेंसिल बनाना चाहते हैं या जो भी प्रोडक्ट क्यों करना चाहते हैं? From where did you get that idea? उसके पीछे भी कोई रीजन होना चाहिए. ये नहीं कि आपने बैठ के एक दिन आपके दिमाग में कोई बात आ गया और आप उसके पीछे चल दिए. उसका रिसर्च कीजिए, देखिए कि हाउ वायबल, फिजिबिलिटी स्टडी हम लोग करते हैं, whether it is economically feasible, it is technically feasible, it is can be marketed. All these things we have to see before starting the actual design. भी आप feasibility study करते हैं और देखते हैं कि नहीं ये नहीं चलेगा, तो you go for something else. तो जो जहां आप देखेंगे कि हाँ ये feasible है, viable है, हम बना सकते हैं, तो अब चलिए उसके लिए मार्केट है. एक once I had read a small story in Reader's Digest. There was one man, because he was not, उसके ऑफिस में कुछ छटनी हो रही थी, and he had not studied up till that mark which was required in the office. He was laid off. Naturally, he was very upset about it, and he was at a place, he was just walking and thinking what to do now that I've lost my job, what should I do? At that time, he felt like smoking. So he looked around to see if any pawn shop was around. He could not find one. So he started a shop. Well, that idea came to him. Then he saw that demand is there and it is not available. That product is not available. So he started a shop. And by the grace of God, see, for anything, you have to have an idea. You have to work on that idea. You have to make a model of that idea. But there is one feature that is luck also. That Sorry, ma'am. Luck. Okay. That is also there. Maybe two persons are having the same idea, and they have floated the same idea. For one receives success, another does not receive the success at the same rate. So it is luck only. So there's some sort. Anyway, so his business went off very well, and he started earning a lot of money. So one day, a friend of his said, if you had studied, you might have done much better. But he just smiled. Because if he had studied, he would have been stuck in the same job. And he would have earned less than what he was earning today. It is not that everything is correlated with whatever you have. In life, you don't know where and how things will be moving. But you have to keep on facing that challenges. You should make yourself that strong. The idea you get, but then you have to test and see and do research and see whether that idea is what the market wants, what the people want, what the consumer wants. Because after all, it is the consumer which will be deciding your fate. आप कितना भी अच्छा सामान बना लीजिए, कितने भी अच्छा सर्विस दे दीजिए, if there are not people going to take it, then what is the use? कि one time तो है नहीं, आज बोलेंगे फिर उससे कल बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा. पहले आइडिया को बहुत आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना पड़ेगा, उसकी फिजिबिलिटी को, उसकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी को, उसकी मार्केटिंग फिजिबिलिटी को, उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी को. फिर am I correct? Mr. Satyanarayana. Yeah, ma'am. Right. अभी तो So there are any techniques? I said you know, आइडिया है तो रिसर्च कीजिए उसके बारे में, पता कीजिए. Yeah. Okay. बिना रिसर्च के नहीं होता है ना कि आप
सडनली आपके दिमाग में कुछ आया, आप शुरू कर दिए, ऐसा नहीं होता है ना। उसको प्रोटोटाइप बनाते हैं, हमको उसको टेस्ट करते हैं छोटे लेवल पर, यदि वो फिट होता है तब आगे बढ़ते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरह तो नहीं कि उनको आइडिया आया कि डिमोनेटाइजेशन कर दे, उससे क्या तकलीफ होगी वो नहीं सुने। उनको दिव्य दृष्टि आ गई, भाई ही इज अ ग्रेट पर्सन, Right, ma'am. हो गया। अब उसमें जो भी तकलीफ है वो तो हम सहेंगे ना। Right. So it is not that everything in a scientific research you have to do first prototyping. जैसे छोटे लेवल पर उसको पायलट स्टडी करके टेस्ट कीजिए, जो भी आपके पास आइडिया है उसको पहले तो आप रिसर्च कीजिए कि ये आइडिया वायबल है कि नहीं है। हो सकता है सुनने में बहुत आसान है, मगर जब वो आप धरातल पर लाएंगे तो नहीं चलेगा। You have to take opinion of various person related to that field. Right. And time is also very important. अब इतना एनालाइज करने में टाइम मत लगा दीजिए कि तब तक दूसरे आपके कंपिटिटर्स आ जाए। मे बी less brilliant idea, but since they have entered the market before you, they'll start doing better than you. Time to market is also very important. उतना ही टाइम लगाइए कि आप किसी से पीछे न रह जाए। Is that clear? Right. Yeah. Actually, there's not only clear-cut solution to anything these days. You have to try and see, but in a stipulated time frame. Because there is a constraint on time. That is the biggest constraint. What you have to do now, you have to do now. You cannot. Right. I was teaching someone. A class 7 में लड़की है. She had come to me. So there was a story. He wanted to know what are the 3 most important things in life. 3 important questions in life. So एक था, when is the right time to do something? Then he came to know कि now. So for example, a child, when he or she is growing up, उस समय वो जो सीख लेता है, whether it is studies or any skills, that is much better. वो टाइम यदि निकल गया तो फिर later on बहुत मुश्किल हो जाता है. Right. Then the people around you, they are the most important. जो अभी आपके पास है, उनसे आप कैसे रिएक्ट करेंगे? जो अभी मार्केट आपके पास है, उनको क्या जरूरत है? अभी उसके लिए आप प्रोडक्ट या जो भी आप आइडिया लगाना चाहते हैं उस पर लगाएंगे. एंड द थर्ड थिंग इज डूइंग गुड टू दोज पीपल. अब ये नहीं कि वो मेरे साथ ये किया था, वो क्या था, व्हाट आई शुड बी डूइंग. सो दीस आर द थिंग्स. आई थिंक दैट I was teaching that to a small girl who was in class 7, but then I realized this is very true any moment of our life. The present is the most important time. The present people are the most important people. How you interact with them, that is the most important thing. The idea is, whatever idea you have got, you have to do a deep research on it and see the viability of that idea. Then you have to do a prototyping or pilot testing of that idea. जैसा भी रिजल्ट होगा, then you apply, either you modify करके, या हो सकता है एकदम ही रिजेक्ट हो जाए तो भाई रिजेक्ट ही कर दीजिए. instead of wasting time and money on it, try something else. Any other question? No, ma'am. So next time I want one problem from each one you on forecasting, whether it is simple regression or multiple regression or quadratic regression. I have explained these 3 things. Simple regression is only when you have 2 variables, y and x. X is your independent variable and y is the dependent variable. Multiple regression is y is dependent on 2 independent variables. I'm not going for more than 2. And these 2 should be not correlated. ऐसा नहीं हो कि वो correlated हो. And third is your quadratic. हाँ, जो relationship है वो linear नहीं है, co-linear है, curve है. जो एक median हम जो करते हैं वो curve है.
Is that clear? So, from all 7 of you, Yeah, ma'am. Yeah, clear, ma'am. that is enough for today. We'll continue with this product and service design in our next class. Okay, goodbye. Yeah, Okay, ma'am. ma'am. Bye. Thanks. Goodbye.